العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है बिल्डिंग ए प्रॉस्पेरस सोसाइटी। First of all, we will try to analyze the title, the theme of today's talk. There are three words. Number one, society, building, and prosperous. Society simply refers to a group of individuals living in a relation for common ends. यानी लोगों का एक मजमुआ, यानी कुछ लोग जो एक साथ किसी जगह रहते हैं और इनके यहाँ कुछ कॉमन गोल्स हैं, कुछ इनके कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स और एम्स हैं, तो इसको हम सोसाइटी कहते हैं। यानी किसी भी जगह कुछ लोग एक साथ रहते हैं तो इनके कुछ कॉमन गोल्स हैं या कुछ ये कॉमनली शेयर करते हैं, तो इसको हम सोसाइटी कहते हैं। फिर कुछ लोग मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो ये डिपेंड करता है फिर पैरामीटर कौन सा हम शेयर ये सेट कर लें, तो हम कहेंगे एग्रीकल्चर सोसाइटी है। कुछ लोग रिलीजन शेयर कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये इस्लामिक सोसाइटी है, मुस्लिम सोसाइटी है या हिंदू सोसाइटी है। इसी तरह से कुछ किसी माउंटेन पर रहते हैं तो हम कहते हैं माउंटेन सोसाइटी है, कुछ डेजर्ट्स में रहते तो डेजर्ट सोसाइटी है। देन बिल्डिंग, how to build a society. Then building involves the both material and non-material construction. It involves both material and non-material construction. That is reforming the society or developing the society on material as well as on non-material, that is spiritual lines. Taking into account or consideration both the material needs of the people and the spiritual needs, the moral values, the political, the economic values of the people. And side by side, the material values, which include the material structures and the material needs of, for example, the food items, etc. And the word prosperous. The word prosperous nowadays is used in highly commodified way, because after the industrial revolution, everything, or we can say everything in the society has been commodified. Everything is rated and accounted and measured in terms of commodity. That is in terms of the material, matter, madiyat. Because after the Renaissance, Enlightenment, there came up many ideas, and one of them was the materialism, the banging materialism. But we should use this word very comprehensively, that is successful, well off or well to do, in terms of that is improvement, development, growth, in terms of both material and non-material lines. So there can be many societies, and in the world there are many societies. बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के लोग दुनिया में रहते हैं और मुख्तलिफ किस्म की सोसाइटीज हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा पैरामीटर हम सिलेक्ट कर लें
इकोनॉमिक पैरामीटर लें, सोशल पैरामीटर लें, कोई रिलीजियस पैरामीटर लें, तो जिस किस्म का हम पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे क्लासिफिकेशन के लिए, तो उस किस्म के सोशल यानी सोसाइटी के क्लासेस हमारे पास आ सकते हैं। मिसाल हम कह सकते हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इफ वी टेक इनटू अकाउंट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. And likewise, we, on the basis of economy, we can say the pastoral society, the agricultural society, the industrial society, and likewise, we have many other classes. But so far, our society is concerned, about which we have to uh, talk something or discuss, that is the Islamic society, that is the Muslim society, which is based on Tawheed and Risala, mainly the belief. Because we derive our name from Islam, Islamic society, and Islam mainly involves the Tawheed and Risala. Now, come to the next slide, that is the word building. First word in our theme is building a prosperous society. What building involves? Building is possible through change. And it is said that change is a law of nature. यानी तब्दीली या तब्दील होना या तब्दील करना, ये कुदरत का कानून है, ये मादी चीजों का कानून है. और यहाँ नेचर से अहले साइंस के यहाँ मुराद मादी चीजें हैं, मटेरियल थिंग्स है, नेचुरल थिंग्स है. और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ये तो एक हकीकत भी है कि चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर. बट we have to use this law, this statement in right perspective. There's a lot of confusion about this statement. And we know that human beings also like it. Human beings also like change. And Quran highlights the statement of the nation of the people of Musa alayhi salatu wasalam, that when Allah subhanahu wa ta'ala, जब अल्लाह पाक ने उनको मन सलवा दिया, तो उन्होंने भी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मफहूम अर्ज कर रहा हूं कि तब्दीली के लिए कहा कि उनके गजा में कुछ तब्दीली हो. तो यानी इंसान तब्दीली को पसंद करता है और तब्दीली को चाहता है. अलबत्ता अब यहाँ पर इस तब्दीली के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. दो सवालात को मैंने यहाँ मुरतब किया है. नंबर एक, व्हाट चेंजेस, एंड सेकंड इज व्हाट शुड बी चेंज्ड और व्हाट टू चेंज. यानी व्हाट चेंजेस, क्या बदलता है, कौन सी चीज बदलती है, किस चीज में बदलने की सलाहियत है. यानी कोई चीज, कौन सी चीज अपनी हकीकत में बदलती है और किस चीज को हमें बदलना चाहिए, किस चीज को बदलने की जरूरत है. ये दो सवालात है. इन दो सवालात को समझने के लिए मैंने और एक बात लिखी है, दैट इज देयर आर टू रियलिटीज एग्जिस्टेंट्स. इफ वी टेक एट द वेरी ग्रैंड्योर एंड द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, that there are two realities, there are two existents. One is the ultimate reality, that's independent reality, that is absolute, that is unchangeable. And second is dependent reality, that is changeable and that changes or should be changed. And this ultimate reality is the creator himself, the creator of the universe himself. He is the ultimate reality or independent reality or the absolute, or we can say the necessary existent. He has necessary existence, because dependent reality cannot survive or cannot come into being without the independent reality. So this is the primary question which we touched here, that is what changes. So here we can understand that
only the dependent reality changes. Only the dependent reality changes. The second question has been touched here, or we can say it is the base for building a prosperous society. What is the base for building a prosperous society? There are two aspects with respect to our society. One is the essential aspect, and second is the subsidiary aspect. Essential aspects are infallible and fundamental. They include the basic belief system and fundamental laws governing social, economic, political, and moral issues at personal and collective levels. तो इसमें सबसे पहले क्या आता है एसेंशियल एस्पेक्ट्स में कि बिलीफ सिस्टम आता है, नजरियात की दुनिया आती है, यानी इंसान का नजरिया आता है, यानी इंसान का नजरिया खुदा के मुताल्लिक क्या है, इस कायनात के मुताल्लिक क्या है, और मुख्तलिफ चीजों के मुताल्लिक उसका नजरिया क्या है, और रिसालत के मुतालिक उसका नजरिया क्या है, यानी पहले इसमें नजरिया आता है, और वो नजरिया तो कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तौर पर बयान हुआ है, यानी इस्लामी अकायद जो भी हैं वो सब इसमें शामिल है, बुनियादी अकायद जो भी हैं वो सब इसमें शामिल है, चाहे वो अकीदा अल्लाह पाक का हो, अल्लाह पाक के वजूद का हो, अल्लाह पाक की सिफात का हो, या अंबिया का हो, मलाइका का हो, जिन का हो, और इसी तरह से जन्नत और जहन्नम का हो, मरने के बाद वाली जिंदगी का हो, तकदीर का हो, और अल्लाह पाक की तरफ से अहकाम का हो, डोज और डोंट्स का हो। तो ये बेसिक बिलीफ सिस्टम है। और दूसरे नंबर पर इसमें फंड वो कवानीन आते हैं, बुनियादी वो जवाबित और उसूल आते हैं जो रेवोल्यूशन में आए हैं, चाहे वो हमारी समाज या हमारी माशियत या हमारी सियासत या हमारी अखलाकियात के बारे में हो, चाहे वो इनफरादी जिंदगी के मुतालिक हों या इज्तिमाई जिंदगी के मुतालिक हों। अब इस वाले डायमेंशन को, इस वाले एस्पेक्ट को हम एसेंशियल क्यों कहते हैं, ये मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जो भी सोसाइटी दुनिया में होती है, हर एक सोसाइटी की कुछ ना कुछ बुनियाद होती है, किसी न किसी क्राइटेरियन, किसी न किसी थॉट, किसी न किसी आइडियोलॉजी पर उसकी बेस होती है। जैसा कि अभी हमने समझने की कोशिश की कि जब हम कहते हैं इंडस्ट्रियलिज्म या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बुनियाद पर हम क्लासिफाई करते हैं सोसाइटीज को, तो हम कहते हैं प्री इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल। इसी तरह से इकोनॉमी की बुनियाद पर पास्टोरल, इसी तरह से नोमैडिक, इसी तरह से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, डिफरेंट सोसाइटीज हमारे पास हैं। तो इसलिए हमारी यानी इनका नाम भी एसेंशियल एस्पेक्ट्स है, चूंकि इनकी बुनियाद जो असल में है वो इस्लाम ही है। हमारी सोसाइटी की बुनियाद तो इस्लाम है। देन सेकंड एस्पेक्ट इज सब्सिडरी एस्पेक्ट, which involves the minor social, economic, political, and moral issues or injections or structures. And this dimension or aspect is changeable and requires change as per need in the light of essential aspects. और इसमें तब्दीली की जरूरत है। It requires change as per the need, जो भी सिचुएशन, जो भी टाइम डिमांड करता हो, but that change needs to be done in the light of the essential aspects. That change cannot be done as per one's own mere opinions, whims, or wishes, but in the light of essential aspects, in the light of the theory, in the light of the thought that is embedded in the essential dimension of the society. Because any society is based on some thought, some ideology, some thinking. And I think it is clear. And the base of a prosperous society is this, that we need to understand these basic
these two dimensions of the society, these two faces of the coin. One is the essential dimension, the essential aspect, and the subsidiary aspect. And if we are able to understand it, inshallah, soon we will understand the whole theme, the whole topic, and the aim of this presentation, the objective of this presentation, and inshallah in future we will be able to understand and put everything in order and think in a very right perspective. There is a confusion, and I want to clear it here. That is about Herbert Spencer's statement. And some people say that this statement was not given by Herbert Spencer, and it was given by Huxley, Thomas Huxley. The statement is a theory is murdered by facts. No theory, whatever its quality, is stationary. कि एक जो नजरिया होता है उस नजरिया की मौत फैक्ट्स से होती है. जो इंसान डिफरेंट फैक्ट्स जनरेट करता है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करता है, तो उनके जरिए से एक थ्योरी की मौत होती है, एक थ्योरी को बदल दिया जाता है, एक थ्योरी तब्दील होती है. नो थ्योरी वॉट एवर इट्स क्वालिटी इज स्टेशनरी. कोई भी थ्योरी जो भी है वो स्टेशनरी नहीं होती है, वो एवरलास्टिंग नहीं होती है, वो बदलती रहती है. अब कुछ स्कॉलर्स ने कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टेटमेंट स्पेंसर का है, मगर किसी ने लिखा है कि असल में ये स्टेटमेंट स्पेंसर का नहीं है, ये स्टेटमेंट हक्सली का है. मगर हक्सली ने इस स्टेटमेंट को अगरचे कि हम ये वर्ड्स जो हैं, ये वर्ड्स तो स्पेंसर के नहीं है, अलबत्ता अंडरस्टैंडिंग जो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमें अंडरस्टैंड होता है वो स्पेंसर का ही है, उसमें कोई शक नहीं है. Though that was attributed by Huxley towards the Herbert Spencer. He was one of the great classical sociologists. Spencer was one of the great classical sociologists. He believed in social evolution. He was a fan of Charles Darwin, and he followed Auguste Comte in thinking in this line. This problem can be solved here. I have divided into two sections that we can take this statement true if the theory is based on inductive root of sinus or deductive root based on inductively derived premises. तो ये जो स्टेटमेंट है, a theory is murdered by facts, इसका ये दुरुस्त कहाँ है और कहाँ गलत है. हमारे कुछ स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को ये समझने में बड़ी परेशानी होती है और उसकी वजह से वो हमको दकियानूसी कहते हैं, हमारी बातों को दकियानूसी समझते हैं, और जो भी उनके रास्ते में आता है हर एक को रोंद डालते हैं, हर एक नजरिए को तब्दील करने की कोशिश में है. वो कहते हैं कि आपकी पुरानी दकियानूसी बातें कहती है, आज से 1400 साल की बातें कहती हो, आज से 1400 साल पुरानी बातें कहती हो, इनकी क्या हकीकत है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, कितनी तब्दीलियां दुनिया में हुई हैं, और चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर, और थ्योरी इज मर्डर्ड बाय फैक्ट्स. आप जो ये थ्योरीज और आइडियाज बोल रहे हैं ये तो कहाँ के रह गए, दुनिया ने कितनी तरक्की की, तो नए नए नजरिया, नए नए ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, नए नए फैक्ट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो आपके आइडियाज है, थ्योरीज है, ये तो सारे रिफ्यूट हो गई, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है. तो ये हमें एक गलती है अंडरस्टैंडिंग में असल में. तो इसको मैं दुरुस्त यानी अपनी तरफ से जो जैसे मैं समझता हूँ, तो ये दुरुस्त हम मान सकते हैं अगर जो थ्योरी इंडक्शन पर बेस्ड हो. इंडक्शन मतलब कि किसी ने किसी जगह, मिसाल के तौर पर किसी ने एक जगह पर देखा कि पहाड़ पे सर्दी है, तो दूसरी जगह पे गया तो वहां भी देखा, तीसरी जगह पे गया तो वहां भी देखा पहाड़ों पर सर्दी है, तो चौथी जगह पे गया वहां भी देखा पहाड़ पर सर्दी है. तो उसने कहा कि नहीं, पहाड़ जो है दुनिया में सारे पहाड़ों पर सर्दी है. तो ये एक इंडक्टिव आर्गुमेंट है, इंडक्टिव स्टेटमेंट है.
और यहाँ से जो कंक्लूजन बन गया, जो थ्योरी बन गई, वो इंडक्शन पर बेस्ड है, वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है, और वहां से एक जनरल स्टेटमेंट को बनाया गया, एक जनरल थ्योरी को बनाया गया, एक जनरलाइजेशन को डिराइव किया गया। अब ये इस तरह की थ्योरी बदलती रहती है। इस तरह की थ्योरी जब मजीद इंसान ऑब्जर्वेशन करता रहता है दुनिया में, क्योंकि जब पहले ऑब्जर्व किया गया तो कुछ 2, 4, 5, 10, 15, 20 जगहों को देखा गया और एक कंक्लूजन ड्रा किया गया। अब सारी दुनिया को नहीं देखा गया, सारी दुनिया में ऑब्जर्व नहीं किया गया, कुछ जगहों को देखा गया, और कुछ जगहों की बुनियाद पर, यानी जो भी ये यूनिवर्स, यानी जो पॉपुलेशन था, जो भी साइज था, मिसाल के तौर पर अगर दुनिया में 100 माउंटेन है तो 100 में से 10 को, 15 को, 20 को, 40 को देखा गया, 100 के 100 को नहीं देखा गया। तो इस तरह से कंक्लूजन ड्रा किया गया। इसी तरह से मिसाल के तौर पर किसी एक गरीब इलाके में गए रिसर्च के लिए, तो वहां देखा गरीब लोग हैं और उनकी सेहत खराब है, अमीर लोग हैं उनकी सेहत अच्छी है। फिर दूसरे इलाके में गए, वहां भी देखा गरीब और अमीर है, गरीब लोगों की सेहत खराब है, अमीरों की अच्छी है। फिर तीसरे में गए, वहां भी देखा गरीबों की सेहत खराब है और अमीरों की सेहत अच्छी है। तो अल्टीमेटली एक कंक्लूजन ड्रा किया गया कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी सेहत खराब होती है। तो ये कंक्लूजन भी, ये जो थ्योरी है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द इंडक्शन। अब ये जरूरी नहीं कि जो जितने भी दुनिया में गरीब लोग हैं वो सारे के सारे बीमार होते हैं, वो सारे के सारे उन सब का हेल्थ खराब है। तो इसमें इस कंक्लूजन में प्रॉब्लम हो सकती है, और जब मजीद ऑब्जर्व किया जाएगा, मजीद तहकीक की जाएगी, मजीद रिसर्च किया जाएगा, तो एक मुमकिन है कि इसके खिलाफ भी कंक्लूजन आ सकता है, इसके खिलाफ भी कोई ऑब्जर्वेशन आ सकती है, जिससे ये इंडक्टिव थ्योरी जो है, इंडक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी जो है, ये फेल हो सकता है, ये बदल सकता है। And for this type of theory, this statement of Spencer is true. There is no doubt. Or it is also true in case there is a deductive conclusion, or or the scientists have uh, employed a deductive route of understanding the reality. But that deduction, that deductive reasoning, that deductive logic, if that is based on itself, that is based on inductively derived premises, because deduction itself is based on something. Deduction does not work in the air, it does not work out of the medium. There are premises also for deduction as well. For example, if we say that man is mortal and Mr. A is a man, therefore Mr. A is mortal, then what is the basis? If we take out religion, if we take religion out of this understanding here for some minutes, then we can say that a man is mortal, because we have been seeing throughout history, we have been observing throughout history that human beings die, they are mortal. But scientists are working on different projects, the geneticists, the microbiologists, and many other scholars are working on different models of lengthening the life of the human beings, and they think that they may be able to make the human being's life everlasting, that human beings will not die in future. So there is possibility that human beings may die or may not die in future. As per the science, as per the thinking, as per the rational faculty, there is possibility. Both the ways are possible. But as I have already told you that if there is a tie between in the rational faculty between two opposing or two opposite statements, that this thing will happen or this thing will not happen. For example, humans are mortal, humans can be immortal, immortalized. There is a contradiction in these two. Maybe, may not be. And I have told you that if there is a sound report, and this is the induction. This is the induction. And if we base our deductive thesis on this type of induction, possibly there may be a wrong conclusion, and this deductive hypothesis and this deductive theory in future will fail. For example, it may fail in future. But through religion, through revelation, we have the absolute information that is provided by the khabar mutawatir, by the revelation, that gives us the certain knowledge, the absolute knowledge, and that is a sound report of highest degree, sound report of highest quality. And I have told you there's a principle, there's a rule.
that if there is a probability or possibility of something to happen or not to happen, and at that time, if we have a sound report and that supports one side, it is necessary for us, it is incumbent on us to accept that side which is supported by the sound report. And here, human beings are mortal or can be mortalized. Here, the human beings are mortal is supported by the sound report. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. This is a sound report, and this is khabri mutawatir. So my point here is that this Spencer statement is true if our theory is based on pure induction, or it is based on deductive route of understanding, and that deduction is itself based on inductively derived premises. And in these two matters, in these two ways to understand the reality, the Spencer's statement is true or may be true. But so far, the essential dimension or the aspect of the society is concerned, there is no significance for Spencer's statement, because that part of the society is established by the absolute rational faculty and absolute revelation. That is absolute knowledge and certain knowledge produced or provided by revelation. And there is no contradiction between the absolute rationalism and if human beings are able to reach to that level, and the revelation, that provides us the absolute knowledge or certain knowledge. But what to say to our scholars and students? They have got trapped into this confusion and are not able to come out of this, and with the result, they refute and keep on changing the basic platform of the society, that is even the essential dimension of the society, essential dimension of our life. تو بیسک پرنسپل جو تھاٹ میں ہونے چاہیے وہ کچھ یہ ہیں. ایک ریکوگنائزنگ اینڈ فرملی بلیونگ ان the existence of Allah with his beautiful attributes, یعنی اللہ تعالی پہ پورا یقین رکھنا، مکمل یقین رکھنا اس کے وجود پر اور اس کے اسماء حسنہ پر، جو بھی اللہ پاک کے صفات حسنہ ہیں ان سب پر. یعنی جیسے اللہ تعالی علیم ہے، قدیر ہے اور خبیر ہے اور حکیم ہے، مقتدر ہے اور مختلف متصرف ہے. اور دوسری چیز دا بلیف اینڈ نیسیسٹی آف 4 اینٹیز، اسپیشلی اللہ، ریولیشن، میسنجر اینڈ ہیئر آفٹر. ان 4 چیزوں کی ضرورت کو سمجھنا، اور اس میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو واجب الوجود ہے، اور اس کے بعد ریولیشن، میسنجر اور ہیئر آفٹر. یعنی ان پہ یقین رکھنا اور ان کو سمجھنا. اور اس کے بعد ریلیشن شپ آف کریٹر ود ہز کریشن، یعنی خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا مخلوق کا خالق کے ساتھ کیا رشتہ ہے. تو اگر یہ اس طرح کا یعنی نظریہ نہ رہے گا، اس طرح کی تھاٹ نہ ہوگی، خالق کو اس نظریے سے نکالا جائے گا، ریولیشن کو نکالا جائے گا، میسنجر کو نکالا جائے گا، ہیئر آفٹر کو نکالا جائے گا، تو کوئی پراسپرس ڈیولپمنٹ، کوئی سوسائٹی صحیح نہج پر وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی بیلنسڈ سوسائٹی نہیں بن سکتی، کوئی معتدل سوسائٹی نہیں بن سکتی ہے. سوسائٹیز تو ہیں دنیا میں، اور سوسائٹیز تو رہیں گی، اور سوسائٹیز تو آتی رہیں گی، بنتی رہیں گی، مگر کوئی معتدل، کوئی بیلنسڈ، کوئی جسٹ سوسائٹی وجود میں نہیں آ سکتی ہے اگر یہ چیزیں اس سوسائٹی کے نظریے میں نہ ہوں گے. اس سوسائٹی کے بنیادی نظریے میں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو تب تک وہ اس طرح کی سوسائٹی وجود میں نہیں آ سکتی ہے جو ایک آئیڈیل سوسائٹی ہو سکتی ہے، جو ایک پاسبلی آئیڈیل سوسائٹی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ریلیشن شپ امنگ ہیومن کمیونٹی ایٹ ڈفرنٹ جغرافیکل، کلچرل، ریلیجیس، نیبرہڈ، کنشپ لیولز، یعنی انسانوں کا آپس میں مختلف جغرافیکل یا کلچرل یا ریلیجیس لیولز پر آپس میں جو ریلیشن شپ ہے، اس چیز کو پہچاننا
اور اس چیز کو پورا کرنا. اور اسی طرح سے the position and order of all existence, necessary and dependent, and the interrelationships. Order and position of material and non-material entities of human life. جو نان میٹیریل اینٹیٹیز انسان کی زندگی کے ہیں وہ ہمیشہ اینٹیسیڈنٹ ہوتے ہیں, ہمیشہ فور فرنٹ پر ہوتے ہیں, اور جو میٹیریل نیڈس ہیں, میٹیریل چیزیں ہیں, میٹیریل اینٹیٹیز ہیں, دے آلویز شوڈ بی سبسروینٹ ٹو دا نان میٹیریل اینٹیٹیز, نان میٹیریل اور سپر نیچرل اینٹیٹیز. اور اسی طرح سے آرڈر اینڈ پوزیشن آف آل ایگزسٹنس, اس میں تو خالق کا مقام کیا ہے, مخلوق کا مقام کیا ہے, انسان کا مقام کیا ہے, اسی طرح سے باقی انسانوں کا مقام کیا ہے, ہر ایک انسان کا مقام کیا ہے, کس انسان کا کیا مقام ہے, چیزوں کا کیا مقام ہے, کھانے کی چیزوں کا کیا مقام ہے, اور جانوروں کا کیا مقام ہے, اینیملز کا کیا مقام ہے, اور مٹی کا کیا مقام ہے, پتھروں کا کیا مقام ہے, پانی کا کیا مقام ہے. ان چیزوں کے مقام کو, معرفت کو پہچاننا, یہ چیزیں پہلے نظریے میں ہونی چاہیے. جب تو تبھی تو ایک انسان پھر کسی آگ کو اپنا خدا نہیں مانے گا, آگ کو اپنا رہبر نہیں بنا سکتا ہے, پانی کو اپنا رہبر نہیں بنا سکتا ہے. تو وہی انسان جس کو اس چیز کی معرفت ہوگی, اسی کے ہاں پھر صحیح یعنی آؤٹ پٹ نکل سکتا ہے, صحیح پروڈکشن ہو سکتی ہے. اگر آخرت کے نظریے کو انسان نکالے گا تو انسان دنیا میں درندہ بن جائے گا. جب اس کے ہاں نہ کوئی ریسپانسبلٹی اور نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے, جب اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں ہے تو وہ جو چاہے گا کر گزرے گا, تو وہ کبھی بھی بینٹ نہیں ہوگا. تو اس لیے آخرت کا جو نظریہ ہے, اور یہ حقیقت ہے, اور یہ نظریہ بہت اہم ہے ایک پراسپرس سوسائٹی کو بنانے میں, ورنہ تو اس کے بغیر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی جسٹ اور بیلنس سوسائٹی وجود میں آئے. دین وی مسٹ انٹرسپیکٹ آن Allah's call. سورۃ الرعد ہے, سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر 11, کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس والے جملے پر خصوصی طور پر یہاں پر غور کرنا ہے. دیٹ از شیورلی اللہ ڈز ناٹ چینج what is in a people until they change what is in themselves. یعنی اللہ پاک تو لوگوں کے اندر جو کچھ ہے نا, اس چیز کو تب تک نہیں بدلتے ہیں کہ جب تک وہ خود ایسا نہ چاہیں, جب تک وہ خود اس چیز کو بدلنے کی کوشش نہ کرے, اس چیز کی سیکھ نہ رکھیں, اس چیز کی طلب نہ رکھے, اس چیز کی کوشش میں نہ ہو, اس چیز کی جدوجہد میں نہ ہو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے اس کے لیے ہم بہت سارے راستے کھول دیتے ہیں. سیکنڈ از یعنی اگر انسان اب ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, کہ and if you turn away he will replace you by some other people then they will not be like you. یعنی اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم صحیح نہ سنبھل گئے, سنبھلنے کی کوشش نہ کی, تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, ان تتولوا یستبدل, ان تتولوا and you if you turn away یستبدل قوما غیرکم he will replace you by some other people ثم لا یکونوا امثالکم, جو آپ کی طرح نہ ہوں گے then they will not be like you. تو اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں جو دنیا میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے تاریخ میں, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ and such days we rotate among the people. کبھی دنیا میں سختی کے دن ہوتے ہیں, کبھی آسائش کے دن ہوتے ہیں, کبھی آرام کے دن ہوتے ہیں, کبھی پریشانی کے دن ہوتے ہیں. تو یہ سب جو کچھ ہے یہ تو تاریخ کی گردش ہے, زمانے کی گردش ہے, یہ تو چلتا رہے گا. The point is what is my role, what I should do, and if I turn away then Allah will bring some other person and he may replace me by some other person. And non-Muslims are accepting Islam at an increasing rate, and Muslims are becoming murtadeen, apostates.
ये अल्लाह पाक की वाज़ेह एक तंबीह है, धमकी है। अल्लाह पाक का कोई फायदा नहीं इससे, वो हमारे फायदे के लिए कहता है। तो करने की क्या चीजें हैं? ये कुछ करने की चीजें हैं। Some themes for action. The first is thought. Second is proper use of time. Third is knowledge and skills. Fourth is child care. Unity at different levels. Rights and duties. Hierarchy. Generosity. Playing your role. Respecting and valuing others' role. Relationship with non-Muslims. Small financial units. Masjid as center. Belief in afterlife. These are some small pointers that we need to incorporate in our life and act on these themes to be successful, to build a prosperous society.